मिरर नाउ की कैंपेन स्टोरी ओल्ड कार नॉट बेकार का आज तीसरा दिन है। लगातार आप सभी के कॉल और मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और हम आपकी समस्या को लेकर लगातार बड़ी कवरेज भी कर रहे हैं। दिल्ली परिवहन विभाग बिना पूर्व सूचना के लोगों की गाड़ी को उठा रहा है और उसे स्क्रैप में डाल रहे हैं। लोग परिवहन विभाग की इसी प्रक्रिया से परेशान हैं। दिल्ली के लोग लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या ये बेहतर तरीका है आम आदमी की समस्याओं से निपटने का। We have been doing this campaign on Mirror Now, where we have been, raising the citizens' voices as to is it the way, of scrapping the older vehicles by not even giving the prior notice to the citizens here. Now I have few people with me at the India Gate. I'll go across to them. Sir, यहाँ पर दिल्ली में एक ड्राइव चल रही है जिसमें कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं और वो जो पुरानी गाड़ी है वो आपसे ये तक नहीं पूछेंगे कि आप घर पे हैं या नहीं हैं। नंबर देखा और वो उठा लेते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के। क्या लगता है आपको कि क्या ये जो अभी हो रहा है ये सही है? ये सही नहीं है। उनको पहले नोटिस देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई हम गाड़ी उठा रहे हैं, तब उनको भी पता होना चाहिए कि अपनी गाड़ी जाने वाली है या नहीं जाने वाली है, तो उससे कि वो सिटीजन को फायदा होगा उससे। जी, हम आपसे भी ये पूछना चाहेंगे, सिंस यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली एसेंशली, बट while we are doing this campaign here, we believe that old car is not बेकार। सो इसमें हमने ये भी देखा है लोगों का, जो दिल्ली में जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी लगातार ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बिना नोटिस के उनकी गाड़ी उठा ली जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स आते हैं, उन्हें देखने तक नहीं देते कि उनकी गाड़ी में कोई सामान है या नहीं, बस उनकी गाड़ी उठा ली जाती है। डू यू फील दैट दिस इज अ kind of harassment of the citizens here? Yes, this type of harassment is very wrong to the peoples, and I can totally agree to that statement कि हमें बिना प्रायर नोटिस के किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो उन्होंने इतनी मेहनत से, क्या पता वो वेल मेंटेन हो, तो उन्हें पहले प्रायर नोटिस पहुंचाना चाहिए उनके घर पे, ताकि वो कोई एक्शन ले सके, कुछ भी कर सके। कि क्या पता उन्होंने इतनी मेहनत से, इतना मतलब इमोशंस जुड़े हुए होते हैं और उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी जैसे आपने कहा यहाँ पर कि क्या पता गाड़ी वेल मेंटेन्ड हो, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से इसे बांट दिया गया है। 10 साल की गाड़ी होगी डीजल वाली तो उठा ली जाएगी, 15 साल से ज़्यादा होगी पेट्रोल वाली तो उठा ली जाएगी। तो क्या लगता है कि अगर कोई गाड़ी वेल मेंटेन्ड हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लानी चाहिए, बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े? हाँ जी, ज़रूर ऐसा करना चाहिए, जिससे क्या होगा, मतलब अगर वो एक बार भी अपनी गाड़ी बेक करते हैं तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है तो एक तो उन्हें फाइनेंशियली बर्डन नहीं होगा, और दूसरी बात, ये पॉलिसी जो होगी वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और सीधे रुक लेते हैं, हमारी सहयोगी श्रेया इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं। श्रेया, आप लोगों के साथ जुड़ी हैं, लगातार हमारी ये कैंपेन भी चल रही है, आज जो तीसरा दिन है इस हमारी कैंपेन का। दिल्ली के लोगों को क्या लग रहा है, क्या उन्हें लगता है कि ये सही तरीका है, राइट वे है, जिस तरीके से जो दिल्ली विभाग के जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं? Once again, I am live from the national capital and I will go across to the people once again. Sir, I want to ask you, क्या आपको लगता है the way government is implementing the law, ये सही है? बिल्कुल गलत है मैम। इन्फॉर्मेशन दे गाड़ी उठानी चाहिए, पहली बात तो उठानी नहीं चाहिए। 10 साल में गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, और हर आदमी, मिडिल क्लास आदमी प्लानिंग करके पुरानी गाड़ी खरीदता है कि हम इसको चलाएंगे, हमारी फैमिली इसमें सफ़र कर लेगी। लेकिन ये तो, मेरे पास खुद एक गाड़ी है, वो अगस्त में ख़त्म हो रही है, तो पहले गवर्नमेंट को इंटीमेट करना चाहिए कि हम इस गाड़ी को उठा रहे हैं, और उठा रहे तो क्यों उठा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सर, हम समझ सकते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो राय था, टू कंट्रोल दिल्लीज पोल्यूशन, दिस लॉ हैज़ बीन पुट इन प्लेस, बट डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट इज क्रॉसिंग अ लाइन बाय द वे दैट इम्प्लीमेंटिंग इट? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मैम, उसके बाद गाड़ी, पहले तो गाड़ी तो उठानी नहीं चाहिए, या तो उसका जो रेट बनता है वो गवर्नमेंट दे, स्क्रैप में डाल ले उसको, तो कुछ ना कुछ तो करे ना। ऐसे उठा के गाड़ी जब्त कर लोगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है। Also sometimes we see that people have certain kind of emotional value attached to their cars. What do you think about it? Sorry? Emotional sentiment भी attached होते हैं लोगों के कार के साथ? बिल्कुल होते हैं मैम, बिल्कुल होते हैं। एक बच्चे की तरह गाड़ी को आदमी साफ सफाई रखता है,
उसकी जब तो नहीं श्रेया, लाते आप तो उनसे पूजा पूछो और मैं आपको फिलहाल श्रेया यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मेरे साथ बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सिरसा साहब, क्या कुछ कहना है? क्या ये बेहतर, सही और उचित तरीका है जिस तरीके से दिल्ली वासियों को परेशान किया जा रहा है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा और उनकी गाड़ियां उनके घरों के बाहर जो खड़ी हैं, जो कि चल भी नहीं रही हैं, वो उठा ली जाती है और स्क्रैप में डाल दी जाती हैं? नहीं, ये देखिए, पहले तो दिल्ली सरकार और दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि गाड़ियां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उठा रही है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार दोनों ही आम आदमी पार्टी के पास है। मुझे लगता है सबसे पहले गलती ये हो रही है कि इसका प्रचार ही नहीं हो रहा कि आपको, आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो आपको इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। वो प्रोसेस की जानकारी दिल्ली सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट इतनी करती है, अपने पे इतना पैसा खर्च करती है, तो उनको पहले तो दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि अब आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी है, आपका पास ये प्रोसेस अडॉप्ट करना है, आपने यहाँ लेके जानी है। अब ये एमसीडी क्या कर रही हैं, ये तो केवल और केवल कुछ चुनिंदा जो स्क्रैप डीलर्स हैं उनके डीलर बन गई है एमसीडी। ये तो उनका डीलर बनकर काम कर रही है कि उनके खुश करने के लिए आप किसी की गाड़ी उठा रहे हैं, उसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी, कोई फाइनेंशियल डील है। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई खाली चलान करने के लिए उठा रहे हैं, आप उसकी एक एसेट को उठाकर परमानेंटली ले जा रहे हैं। उस एसेट की वैल्यू क्या है आप नहीं डिटरमिन कर सकते। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोसेस बनाया, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए, ना कि जबरन गाड़ियां उठाई जाएं। मुझे लगता है ये सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है एमसीडी के पास। मैंने भी बहुत लोगों की, जब मेरे पास जानकारी आई तो मैंने बातचीत की एमसीडी के लोगों से, उनको पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी बस हमें आके डीलर कहता है ये 15 साल पुरानी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से उठाओ, क्यों खड़ी कर रखी है, हमें, हम पूछते हैं कागज दो, नहीं है तो उठा के ले जा रहे हैं। बताएं, ये तरीका है? तो ये बहुत जी, यही तरीका है जो दिल्ली वासी भी इस पर नाराज हैं। जी, इनको प्रोसेस जी, बनाना प्रोसेस चाहिए, नहीं है कोई। उसकी सिरसा कैंपेन साहब, चलानी शुक्रिया चाहिए, साथ लोगों जुड़ने को के लिए, जानकारी बातचीत देनी करने के चाहिए, लिए। लोगों को अवेयरनेस जी, करानी चाहिए। यही सरकार का काम होता है और शायद इसीलिए जनता जो वो सरकार को चुनती है। फिलहाल सिरसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हम इस पर बड़ी कवरेज कर रहे हैं और हमारे सहयोगी भी तमाम जगहों से हमें ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी सहयोगी श्रेया ने ये रिपोर्ट, आपको बता दे, दिल्ली के मयूर विहार से ये रिपोर्ट हमें भेजी है कि एक परिवार कैसे बिलख रहा है, उन्हें पता भी नहीं और उनकी गाड़ी को जो परिवहन विभाग है वो उठा के ले गया। वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारी सहयोगी श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी भी हैं। श्रेया, देखिए, आपने तमाम रिपोर्ट्स भी हम तक पहुंचाई है और दिल्ली के लोगों का भी साफ तौर पर श्रेया यही कहना है कि ये जो तरीका है, ये जो वे है, क्योंकि उन्हें भी कानून मालूम है, 15 साल पुरानी उनकी गाड़ी हो गई तो वो भी स्क्रैप में डाल सकते हैं या फिर वो चाहे तो दूसरे राज्यों में, दूसरे सिटीज में, दूसरे जो छोटे टाउन्स होते हैं, गांव होते हैं, वहां पर उन्हें बेच सकते हैं। बहरहाल उन्हें इसके पहले सूचित किया जाना चाहिए। You know, I have people with me and I would better ask them the question. Let us hear from them. Sir, क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है जैसे गवर्नमेंट कर रहा है, जैसे आपने बोला कि हैरेसमेंट हो रहा है और कभी-कभी ऐसे भी होता है कि लोगों का इमोशनल वैल्यू भी अटैच होता है? इमोशनल वैल्यू होते हैं। गवर्नमेंट जब हम गाड़ी लेते हैं तो उन्होंने 15 साल का हमसे रोड टैक्स लिया होता है और जब हम गाड़ी लेते हैं तो बिल्कुल उसको बच्चे की तरह रखते हैं, उससे अटैचमेंट हो जाती है। उसमें हम भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, अपने इष्ट देव की फ़ोटो लगाते हैं, गाड़ी के पीछे बच्चों के नाम लिखते हैं, ठीक है जी। और 15 साल में कुछ ऐसा, 10 साल में कुछ ऐसा बिगड़ता नहीं गाड़ी का। जिसके पास पोल्यूशन, वैलिड पोल्यूशन नहीं, आप उसको उठाओ, उसको बंद करो। ये थोड़ा ना जो 10 साल की उसको बिना इन्फॉर्मेशन उठा के आप बंद कर दोगे, ये तो बहुत गलत पॉलिसी है गवर्नमेंट की। So as you can hear, the people, they believe that this is of course not the right way how government is implementing the law right now. And not only that, people are also sentimental that, you know, they are also attached to their cars. They put pictures of God in the car and they feel sentimental at this point. राइट, श्रेया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, घर में कोई भी सामान हो, उससे लोगों के सेंटिमेंट से जुड़े होते हैं, यादें जुड़ी होती हैं। बहरहाल दिल्ली वालों के लिए ये मुसीबत बन के सामने आ गई कि उनकी 15 साल की जो पुरानी गाड़ियां हैं उसे किस तरीके से स्क्रैप में डाला जा रहा है। अब आपको अपनी सहयोगी श्रेया की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने मयूर विहार से एक परिवार से बातचीत करने के दौरान हमें भेजी है। देखिए। You said your cars have been taken away without any notice. So I want to know more about what happened.
Well, actually, the whole episode landed to me like a brain damage. It was such a disaster to me because it was not been informed in time. I mean, we were not aware of it, anything, something like going to happen. And suddenly, the bunch of people, they just attack. I tell you, it was a real attack on the cars. And they just jumped on my car and start locking it up and wrapping up with the rope. And before I ask anything, they said, your RW has already been informed, but we have not received any kind of notification for that. And in front of me, I mean, they took away my peace of heart. Yeah, it is that emotional. The Supreme Court have said that cars older than 10 and 15 years can't ply on the road, but they have never said that, the government can enter people's houses and this is a residence and this parking is in the heart of the residence and take it. You can see that from this pocket only 7 to 8 cars have been lifted. Number one, ladies were crying, children were crying. They never heard. When anybody tried to raise, they came with the bouncers. So People were also threatened. So in this kind of scenario, this is the capital of the country. So now you can imagine if in the capital of the country this can happen, it can happen anywhere. Sir, I will come back to you, but sir, quickly I will also go to you. I want to ask you, do you think that the government is crossing a line here? Because I understand what the Supreme Court have said in the 2018 order, and this law is in place to curb the pollution of Delhi, and people who lives in Delhi can swear by the pollution level we have here. But again, the Supreme Court never said that how to implement the law. It never said that you can go to people's houses and take away their vehicles. So what is your opinion on that? Yeah, see, I'll like to touch upon 2-3 things. My name is Rajesh Kumar Dokwal. I am a retired banker. See, I owned a diesel car, which was, around 10 years old. I had bought it for 8.5 lakhs. I had to perforce sell it for about 70,000 rupees because it was becoming 10 years old. And you know what was the mileage on the mileometer? 60,000 kilometers. Only 60,000 kilometers run. How can a car which is fitted with a BS4 engine pollute? That is the one question which perhaps has not been addressed by the powers that be. See, on the one hand, the customer was asked to pay much more for BS4, BS5, BS6 engines, when those engines were supposed to pollute much less than what it was the older cars were doing. What is the intelligence, what is the rationale for bringing in this law that any car which is 10 years old, even personal vehicles, maybe commercial vehicles one can understand, but personal vehicles used by anybody, even if it is 2 lakh kilometers, it will not pollute because it is fitted with a BS4, BS5, BS6 engine. So this policy is, I do not know what is happening. All the entire episode looks like a big joke. Sir, I understand that you are raising questions on the justification of the law to exist on the first hand, but also, sir, I would like to ask you. See, even if Supreme Court have come out with this order in 2018, we understand, but they have never mentioned that government can go to people's houses and take away their car without serving a notice. So do you think that on the government side also, to implement a law like this is an harassment to the people of the country? That is another episode of an abject, violation of the human rights, of the law of the property of the people. Nobody can snatch away a property from me just because because of some law. It cannot be plied on the road. But the question is, it was not plying on the road, it was being parked in a garage. So my property, if it is parked in a garage, how can somebody come and just pick it up just like that? And that too, very selective. It is not that they have taken away or picked up all the cars in Delhi which are, diesel ones more than 10 years old or petrol ones more than 15 years old. So who is doing this pick and choose is also another question. Yeah. Thank you so much, sir. Sir, I would come to you, sir. So, with the same question, first of all, do you think that this is the harassment of the people? And do you think that the government can do better? Is this the proper way to implement our law, just so forcibly on people? The government can do if the vehicle is roadworthy and non-polluting.
government should give at least 5 years extension to that vehicle. Number one. Number two, it is not good to pick up the vehicle from the resident. As per order, the vehicles, those who are plying on road, that will be confiscated. If it is parked at any place, they should not pick up. The owner may sell it outside NCR. He is free to do it. Then he can earn more money instead of this scrap money. So, government should review this law in totality. Thanks. So I would come to you with another question. In 2023, we have this debate that will AI take over human beings? So that rings a bell in our mind that how technologically we have advanced. So do you think that if the government have given the people a chance, if the people were given a prior notice, then maybe in this, in today's world when there is so much of technological advancement, they could have transformed their cars to an e-car or something like that? Look, transforming into a different format is a different issue, but thing is that which car is already doing well. Look, I was very, very particular with the car servicing. It was not political. We should give a health certificate, health check. I mean, converting into why another cost head on us when we are already maintaining our car so well. Give us a health check. If it is not working, I am ready to give my car to scrap. But when it is working fine, and you just snatch away like this without any prior notice, so I don't think so. I mean, giving a health checkup is the right solution. और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं हमारी सहयोगी श्रेया के पास, जिनके साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं। श्रेया, लगातार दिल्ली वासियों की जो समस्या है उसे हम मिरर नाउ पर दिखा रहे हैं। उनकी क्या प्रॉब्लम है वो हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से बिना प्रायर नोटिस के उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी इस बारे में पूछिए। As the government continues to tow people's car without serving them a notice, we also continues with our campaign. Right now, I'm joined by more residents. I will go to them directly. Sir, क्या आपको लगता है ये सही तरीके होता है कोई लॉ अपनाने का? मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होता है ये किसी भी तरीके से करने का, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी की प्राइवेट चीज़ है, कुछ भी है, आप ऐसे उठाकर ले जा रहे हो। इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। एटलीस्ट उन्हें कोई नोटिस दे दीजिए, या मतलब कोई स्टिकी नोट से कुछ भी एक तरह का अलर्ट दे दीजिए कि वो उस चीज़ को ध्यान रखे आगे से कि इसको या तो चेंज करे या मॉडिफाई करे या जो भी कर सके। बट एटलीस्ट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इनकेस आपके घर भी खड़ी रहती है, वो आके उठा के ले जा रहे हैं। आई थिंक दिस नॉट मेकिंग सेंस। क्या आपका मानना है कि गवर्नमेंट कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, आपके घर से आके उठा के लेके जा रहे हैं? एटलीस्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया कि मतलब ऐसे घर पे आके आप सीधा आपकी प्राइवेट चीज़ें उठा के ले जा रहे हैं, कार है या जो भी आप उठा के ले जा रहे हो। एटलीस्ट आपके सहारे कोई दूसरा स्कैम भी कर सकता है। आप तो कार ले जा रहे हो बट वो भी गलत है, पर आपके सहारे कोई कुछ और भी लेगा तो वो भी गलत है। आई थिंक दिस इज़ रियली रॉन्ग और बहुत ज़्यादा ही हैरेसमेंट वाली बात है ये। Thank you so much, sir, for speaking to us. So as you can hear, people are of course not satisfied about how the law is being implemented, and they feel that this is harassment. Over to you. राइट श्रेया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली वासियों को लगातार लग रहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और ये एक सही तरीका नहीं है, उचित तरीका नहीं। इस तरीके से उनकी गाड़ियों को, उनकी खुद की प्रॉपर्टी को उठाना उनके घर के बाहर से। अब आपको दिखाते, मेरी सहयोगी श्वेता ने एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद बीएन कुमार से बातचीत की, जिन्होंने कहा कि नीति सही हो सकती है लेकिन तरीका सही नहीं। सुनिए। So what is Delhi government's traffic department is exactly doing? What is the scrapping policy and how is this affecting the environment anyway? To talk more on this, we are joined by well-known environmentalist and he's a founder of Net Connect Foundation as well, Mr. B.N. Kumar. So thank you for giving us your time. Firstly, I would like to know what is happening in Delhi is quite appalling, where people are quite worried about their car, as without serving them prior notice, the traffic department comes, they tow away their car and they impound them. Firstly, tell to our viewers what sort of harm is that with the car which are parked and which are fit? Actually, scrapping the old cars of 15-year-old for petrol and 10-year-old for diesel, it's a good policy. Roads have to be clean, our environment has to be clean. But the way the government is going about implementing the policy, executing, it is absolutely cruel.
You know, people have the right to their property. If the cars are fit and to be run, they should be spared. And in any case, whatever law comes into implementation, they have to have proper guidelines for implementing it. People should be told what kind of implementation is going to take place, how the officials will come down to pick up the car, or they should be given time to surrender their cars. Right. And also the kind of value that people get for surrendering their old cars, that value has to be a little high. 4 to 6% is very minuscule amount. And the way I think the Delhi government is doing about is very cruel, very, very cruel. Right, right. Also, sir, help us understand, is there any sort of emission of carbon dioxide or something which is affecting the environment on a larger note, that without serving a notice at least of a week or 15 days, they are quickly taking away the car? Actually, if government is implementing this policy, they can come and test each car with for the emission. And you know, of course, the carbon monoxide emission is definitely impacting the environment. More than the passenger cars, there are the trucks, heavy trucks, the dumpers. Particularly in Mumbai, if you go to JNPT area, if you go on the highway, you see a lot of the dumpers, old dumpers, you know, whose number plates also you can't even read because of the dirt on them. Those kind of vehicles, they emit so much of spew actually, so much of poison into the air. If you go to APMC market, in the wholesale market, you find a lot of old trucks coming in there. These all contribute to the air pollution. In fact, air pollution in our area, Navi Mumbai, has been very high. When the pollution was very high during summer months of March, April, Uran topped the global charts. It is number 6 worldwide on a particular day, and is number 4 in all India position. So there is pollution. Automobile pollution is definitely a matter of concern. Right, right. But sir, my last question would be, what Delhi government is doing certainly affecting the people also there. What is the solution according to you? As you know, we do understand after certain years, like say 15 years for petrol cars, it does affect the environment, but what is the solution here? The solution is the traffic department, RTO, have the record of all the vehicles. And most of the vehicle owners, when they buy, everything is today linked to Aadhaar and PAN. People definitely have the record of the cars. They can go and ask them, they can conduct camps for checking their emissions. If they are fit, let them okay. If they are not fit, give them the de-registration immediately. And that, as I said in the beginning, the compensation has to be a little high so that people will find incentivized to go and surrender their cars. But not certainly brazenly picking up the car and taking away. Brazenly picking up the cars is very, very, it is inhuman. It is not done. It's totally not acceptable. तो ये तो हमने आपको सुना है कि एक पर्यावरणविद का क्या कुछ कहना है। अब इसके लीगल फ्रंट पे भी हम आपको बातचीत, हमारी सहयोगी श्वेता ने बातचीत की एक लॉयर से, वो भी सुने कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर। Well, as we are uncovering every aspect of the story to talk more about the policy and the legal point of view, we are joined by Mr. Aditya Pratap Singh. He is well-known advocate. Sir, thank you for giving us your time. I know you are running short of time. Only one question to you. How important it is for the residents to know their rights, as well as what the Delhi government is doing? Is they fair on their part? Well, no, it is definitely not correct. Delhi government has no right to seize vehicles and then put them in auction. See, if they don't want the vehicles to ply on the road, the vehicles need not ply. And if they want, the vehicles should instead, they can find the vehicles, they can impound them, but they cannot sell them. So long as the people keep the vehicles inside the houses, no problem. You can levy illegal parking charges, whatever. But the fact of the matter is, you have no right to violate a person's constitutional right to property under Article 300A of the Constitution of India. Right. And which is why I do believe that the Delhi government's actions of unilaterally seizing old vehicles and sending them to the scrapyard, person can even keep his vehicle in storage if he wants. So clearly Delhi government's actions are unconstitutional. Absolutely, this is unconstitutional. My last question to you is, what is the solution for this? Because as we see, this is brazenly defying the law. They are just quickly going, towing it away and scrapping it down. No, it can't. See, first and foremost, you have Delhi government has the entire vehicle registration database. They know who owns which car. They can very easily give him a notice. They can ask him to vacate the public parking spot within a certain day. And moreover, the law restricts them from plying. There's no question of parking. So long as a person parks on a public parking spot, you have a separate remedy. And clearly, because such an act of unilaterally seizing a person's, it is alien to today's constitutional jurisprudence.